And the topic is self-employment only can solve problem of unemployment. Self-employment can only solve problem of unemployment, right? Now you have, it's 8:28 by my side. You have to think till 8:30. 2 minutes are given to you. Now you can go like how much you are in the favor, how it actually solves, what are the criteria a person can go for self-employment, and what are the causes. Like later on, you can even point it out, like what does it mean? First, crucial when you go for some kind of, you can say, introduction, you have to speak the dimension of this, like what is the actual meaning of this statement. Okay, like what are the organized sectors, government sectors jobs are very limited, how a person needs to go for entrepreneurship and all. Okay, from where the ideas could be given, and I give you a promotional, I give you some of the ideas. Nowadays youth are very following, I think, episodes like Shark Tank India. There is a huge, you can say, tendency towards them also, from where you can get an idea of entrepreneurship. Okay, so entrepreneurship and all that, so you can have such ideas. I'm giving you some brief, and some, like, you can even go for vocational courses are being welcomed in the new curriculum. Okay, these are some hacks which you could understand. Vocational courses can be of plumber. Even you don't have to go for only higher sector, lower sector, like someone is going for plumbing or carpentry job. That are the skill jobs, and the person gets employment on their own. Okay, what the education sector is introducing. So there are a number of points. Think about it. At the end, I'll tell you more points if you could not. Okay, your time starts now. Shivam, keep your video switched on. Okay, last 1 minute. Okay, go ahead. Shivam, are you there? I cannot see you. Okay, Roshal, you can start. Ma'am, can I start? Good evening. Yeah, Roshal, go ahead. Good Evening, everyone. I'm Kushal Patel. So today's GD topic is that self-employment only can solve the problem of unemployment. So according to this, what it means that if we are the self-employed, then only we can solve the problem of unemployment. If we had a job, then we can, if we had a job or we had a business, then we can think about the unemployment status of our country or the society. So first of all, for one need to think about their own capacity, what he or she will be able to do. According to him, he can choose the stream that what is best for him. So
Now I have invited everyone to put the point on this topic. I think basically education sector will play the most of the role. When the people are more educated, then they are able to do more startups and things and give more employment to our nation also. But as I in the only starting, I said that one need to find their own capability, right? Everyone is not capable. Yeah, to but start in that starting you that said was wrong at some level, because not both can give basically job. That particular person basically जो person job कर रहा है वो कैसे job को promote कर सकता है और job दिलवा सकता है. Basically जो बंदा business या startup कर रहा है and वो एक बहुत बड़ा बेसिकली हमारे कंट्री के लिए वो होगा कि वो जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री की बहुत बड़ी डेमोग्राफी है और हर किसी को एक नौकरी मिलना आसान नहीं है. 140 करोड़ लोग हैं और सभी के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स हो सकती है, बट वी कैन नॉट एड्रेस ऑल द पीपल एट वंस. Considering this, we have an abundance of opportunities and challenges that needs to be solved at the root level, and we can also do freelancing and get work from the outside and accumulate self-employment and self-income generation. So, yeah. Today because of internet, yes, my friend, because of internet we can do many jobs which only needs informations, and basically we can also do from work from home also, and we don't need any basically money to start that particular thing. Yes, I would like to add that the data rates in India are very cheap, and people can watch YouTube video to acquire a skill, and they can come up with various employment ideas related to food industry, be it preparation of decoration, event planning, food startup. Yes, my friend, as our PM Modi ji is also starting new startup plans and make India, that basically making our India towards more startups and entrepreneurships. Yes, and Yes. as the literacy is also high these days, people can very much start taking their own initiative and be financially aware of how money works by learning through various apps and YouTubes, and they can once they start making something, doing smaller things, they can pretty much scale up and generate employees for hundreds of other people. Yes, Yes, my Mr. friend. I But want to other add than on that, it, basically as you say, that small initiative can become a large initiative. Best example for it is that the Lijjat Papad. It was started on the small scale by the few ladies, and now it become a brand. So that's what we can say is the best thing is happened, that they provide employment to our the country, which we can say that the caliber of that woman, or that it required for one to have a caliber for it. So what I am saying that it is not everyone cup of tea for an entrepreneurship or a business, right? So yes, we require a job person also. Not everyone can be a self-employed. Yeah, Kushal, as you said that it is not the cup of tea for all the people. It's not same for all people. Like in our Indian society, the mindset is today, जो mindset है people's का वो change हो रहा है day by day, and people's काफी entrepreneurship programs देख रहे हैं, काफी basically entrepreneurship and startups को success होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो Indian society इसका mindset पहले होता था जॉब के पर्सपेक्टिव में और गवर्नमेंट जॉब को लेके एंड प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स को लेके, वो अब थोड़ा चेंज हो रहा है. लोग काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं और इंटरनेट का माध्यम से भी काफी लोग जल्दी नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस थिंग्स. Yeah, I think young boys and girls should take the initiative forward. Like in the 1960s, there was a white revolution started by Amul, and many thousands and thousands of people, they joined Amul and they made it a very large success. And even today, farmers are reaping the benefits of collaborating with bigger brands and bigger things. So
I think once there will be a small initiative, and as we can evidently see through various startups and funding related news that are displayed on television and internet, so people are getting curious, and this curiosity will eventually lead to a very bigger change. Vishal, yes, my friend. Basically, आजकल basically in our country, specific जो startups हैं वो काफी जैसे basically low level के भी काफी push किए जा रहे हैं. Like जैसे Uber आ गया है, तो फिर Uber maintenance हो गया, आपका carpentering का work हो गया, आपका painting का work हो गया, आपका all the works, the small works होते थे वो भी अब basically एक अच्छे कंपनी के द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं. और उसमें लो जो पीपल्स थे उनको हायर करके उनको जॉब मिल रही है उस कंपनी के अंदर. लाइक वी कैन से लाइक जोमेटो. सो जोमेटो इज आल्सो हायरिंग फॉर डिलीवरिंग द फूड फॉर द पीपल. सो इट्स बेसिकली एम्प्लॉइंग, एंड इट्स बिफोर दैट इट्स आल्सो ओनली अ स्टार्टअप. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमें ज्यादा स्किल की जरूरत एक्यूमुलेट करने की नहीं है. हम जैसे अगर ड्राइंग भी करते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू वी कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस. अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, सो वी विल डेफिनेटली जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस फॉर आवरसेल्व्स एंड विल बेनिफिट द सोसाइटी एट लार्ज. Yes, Vishal, I can conclude from that particular point that basically I think you are saying like जो भी पर्सन की पर्टिकुलर स्किल्स है वो उनसे मनी कमा पा रहे हैं, उनके स्टार्टअप कर पा रहे हैं. लाइक आई सी मैनी पीपल्स आर ट्रैवलिंग एंड मेकिंग ब्लॉग्स एंड अर्निंग मनी, एंड लाइक अदर पीपल्स आर मेकिंग फूड एंड कमिंग ऑन various startup programs. And recently I have also seen there are also most of the singing and comedy shows, the people are earning from that also. So there are many startups which is giving job to many people and giving opportunity to those people also that have some skills and they have a potential in that, and giving the showcase to all our country. Okay, think about more points. We can also do a small job work which he currently one engineer can't think that he or she will do, right? So if one is an electrical engineer, so they are afraid of doing a small job work. What it means that if one house, or we can say that any spare part is default, right? So he will be shy, or he think that he will not capable to go and that do the change in that. So what I think that we should do the initiative that we also do a small job work type also, that can also provide us the employment. Yes, Kushal, as you said that any part is missing in for particular product, or we can manufacture that or sell that. As you said that basically आपने अभी देखा होगा recent years में हम चाइनास के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं हमारे मोदी से, एंड वो बेसिकली ये चाह रहे हैं हम लोग कि हम इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बनाएं और चाइना से जो हम प्रोडक्ट्स रिसीव कर रहे हैं हम उसे बॉयकॉट करें. और उसके द्वारा कुछ सरकार के द्वारा काफी इनिशिएटिव भी गए हैं जिसके वजह से लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं. लाइक आजकल 5 लाख का सरकार लोन दे रही है टू स्टार्टअप्स एंड टू ऑल द बिजनेसेस that want to grow. And other than that people are also want to boycott other countries products, and they want to own manufacturing products, and they want their own manufacturing parts and their own products to use. So by this employment will be increased in our country. मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया के थ्रू, और हर एक वर्ग के नागरिक को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, स्पेशली फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. गवर्नमेंट जो है एक अच्छा कल्चर प्रमोट कर रही है, एंड आई थिंक इन नियर टर्म लाइक वी कैन गेट लोन अप टू 1 CR
in Atmanirbhar Bharat without any much registration or that. Just being an MSME, we can get a loan. So I think it is very futile time that we can generate self-employment and explore the path of creating multiple jobs and across solving multiple problems in our country. Okay, see, who's going to conclude? Ma'am. Yeah, go ahead. So my friends, we have a good discussion on the topic of self-employment, solve the problem of unemployment. So basically, in our discussion, we have concluded that our basically हमारी जो country है उसमें काफी ज़्यादा startups हो रहे हैं day by day, and हम boycott कर रहे हैं काफी countries के products को और हम खुद manufacturing पे ध्यान दे रहे हैं, and startups हो रहे हैं like delivering, like making more foods and other stuffs also, like manufacturing all the things like smartphones, TVs, and not basically boycotting other countries products. And we are also our जो हमारी society के प्रति हमारी जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है, जो कि सिर्फ जॉब परस्पेक्टिव से थी कि सिर्फ एक कंपनी में जाके जॉब करनी है, to be good, to become a good startup or entrepreneur. Thank you. Okay, now listen, three of you first. What was the topic? Self-employment can only solve the problem of unemployment, right? What was the target about? गवर्नमेंट वो बाहर से कितने पैसे ले रही है, जो विशाल बता रहा है हम लोन उठा सकते हैं, राइट? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देयर, वो दिस शिवम इज टॉकिंग अबाउट द बायकॉटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. क्रुशल ने भी जब स्टार्ट किया, क्रुशल एंड शिवम, आई एंड चलो विशाल इज न्यू फॉर टुडे, but I am pointing you the mistakes first. Krushal, whenever we have to start, was the introduction really good? Did you prepare it? No. Meaning ही नहीं था. I told you, explain the term, explain the terminology. What does it actually mean? You guys are not even aware. Shivam ने भी फटाफट start किया. Shivam, how did you start it out? Directly. Education sector से कोई start नहीं. I am in the favor of this statement. This statement has a great role in our life and we need to be motivated. ये youth के लिए है. कहाँ था perspective अपना? Why you guys miss your perspective? It is always, yes, I agree. Shivam should come ahead. Okay. So, Krushal, I agree with your statement. Yeah, I agree with your meaning. And this is a true fact, actually, that self-employment can only solve the problem of unemployment because government cannot feed a huge population. India is having so much of, you can say, huge population, and it is competing with China also. How can government provide the population to each and every, you can say, employment to every person? Is it possible? That is why Modi government and other government are going more for the privatization. Words are actually needed from your side. This actually judges your political as well as the economic viewpoint. That is why I gave you this topic. मोदी सरकार क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर रही है. बाहर के लोग क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है? बिकॉज दे प्रमोट. यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब को प्रमोशन की जाती है. बट यू नो व्हाट इज एक्चुअली नीडेड? देयर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज देयर. That is what I started with the topic. The topic was all about this only, that how can we become self-employed? If you guys do not get a job, how to become self-employed? You need to earn something. You need to earn your bread and butter. How is that possible? First is if you have the skills. Skills are very much needed. Skills are very much important. And how you can attain the skills? Government cannot provide the jobs, but government can provide some kind of a skill enhancing programs for the youth. Government क्या कर सकती है? Government programs करवा सकती है लोगों के लिए. अब वो क्या कर रही है? स्कूल्स में क्या कर रही है? स्मार्ट क्लास कर रही है, स्मार्ट स्कूल्स कर रही है. सभी गवर्नमेंट स्कूल्स क्या हो चुके हैं? दैट इज दे वांट द चिल्ड्रन टू बी स्मार्ट, सो दैट वोकेशनल कोर्सेज क्यों स्टार्ट करवा रही है? कल को इवन लो सेक्टर्स आर देयर, प्लम्बर्स आर देयर, कारपेंटर्स आर देयर. दैट इज व्हाई आई हाइलाइटेड टू यू, लो सेक्टर पीपल कैन आल्सो गेट एम्प्लॉयड, दे कैन आल्सो अर्न समथिंग. नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ अ पीपल. आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो शिवम. फ्रीलांसिंग कैसे होता है? Freelancing किसके लिए होता है? If you work in some organization, you are doing freelancing for some other person, right? And it is also becoming, how can you get freelancing if you have the skills? Freelancing वाला point मेरा नहीं था. Freelancing, I think Vishal ने दिया था. Yeah, Vishal has given freelancing and YouTube. YouTube one was fine. That by seeing the videos, we can get ideas for how you have to prepare yourself for the future.
बट फ्रीलांसिंग आप किसी के लिए करोगे ना। हाँ, दैट इज, आपको क्वेश्चन में क्या था, इट इज बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, मैं अपने लिए कैसे कमा सकती हूँ, ये नहीं था कि मैं किसी के लिए कैसे काम कर सकती हूँ। क्वेश्चन को पहले समझो, अंडरस्टैंड द मीनिंग। Crucial, it was not, it was a very simple one. Last time you did on difficult topics also, I think neighborhood first policy was done and all these topics were done. Now coming back to the very generic topics you guys are missing. You're missing the hints. Topic ko pehle I am telling you again and again. Then Shivam, your one point was good, like Modi is promoting this startup ideas. That was a good point, which I really liked about you. Vishal's one point was okay, that is about the farmers, the point you gave, right? They are generating their own employment by collaborating. They are also able to generate more of the sector point. So वो points अच्छे थे, दोनों के अच्छे थे. Crucial, it was very generic. मुझे वो और एक शिवम problem in you is peoples नहीं बोलते बार बार, people होता है, ठीक है? तो ये बार बार या तो हाईलाइट ना करो, एस नहीं लगाना, unnecessary s should not be there. That is wrong. मैम उसमें पावर ग्रिड से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे मेरे को दिमाग माइंड में पॉइंट आ रहा था कि लाइक बाय स्मार्ट ग्रिड्स वी आर डूइंग पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, सो हम वो पॉइंट्स डाल सकते हैं। हाँ, यू शुड। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, मैंने ये बोला था कि जब भी जीडी का कोई टॉपिक हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेज। गवर्नमेंट क्या करेगी उस चीज में, यूथ क्या करेगा उस चीज में, बच्चों के लिए क्या हो रहा है उस चीज में, ओल्ड एज के लिए कुछ हो रहा है, ये चीजें मैंने बताई थी उस टाइम पे, ठीक है? एट द वेरी स्टार्ट आई टोल्ड यू टू लुक ऑन दोज 4 सेक्टर्स। सरकार क्या कर सकती है, सरकार हर चीज में कोई ना कोई में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव देगी ही देगी। किनके लिए हो रहा है, यूथ के लिए हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट किसके लिए, यूथ के लिए, यूथ की बात करो। ओल्ड एज छोड़ दो, ओल्ड एज का इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बच्चों के लिए है, बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही 10th से वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करें, जनरेट हो सके। 3 तो सेक्टर्स, आपको 3 पॉइंट्स तो सीधे मिल रहे हैं, 3 पॉइंटर्स यहीं पे थे, राइट? फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपने देखी है कैसे कैसे आ रहे हैं, वही बोले ना, गवर्नमेंट सेक्टर हर एक को प्रोवाइड कर सकता है जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल दिया, मेनी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड from the ideas of Shark Tank India. They have become more of the entrepreneurship. They have entered this sector also. उससे भी employment generate हुई है, employment generate भी होती है, आप लोग अपने पास self employed भी होते हो, साथ में आप कुछ लोगों को रखोगे, आप उनको भी employment दोगे, ये भी तो हो रहा है। इससे multiple points बनते हैं, ठीक है? जब भी कोई टॉपिक हो, प्लीज मेक श्योर यू एंटर, यू डिस्कस ऑन द पर्सपेक्टिव सोशल, गवर्नमेंट, यूथ, चाइल्ड, पॉलिटिकल, या फिर उसके इकोनॉमिक, ये पॉइंटर्स है। अगर लगता है इनमें से ऐसे चूज करके देखा करो कौन सा लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा छोड़ दो, जो हो रहा है उस पे पॉइंट बना दिया करो। व्हाई डोंट यू यूज स्ट्रैटेजीज फॉर, यू कैन से, गोइंग थ्रू एनी टॉपिक, there are strategies. Pointers ऐसे नहीं बनते, even we make pointers. When you have 2 minutes, even I start writing the topic कि मैं क्या क्या points बोलूं, मैंने उस टाइम पे सोचती हूँ कि बच्चों के लिए क्या आएगा और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज के साइड पे क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, सोचा करो। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, हम उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमारे इंडिया में अभी एजुकेशन में कम है, हम थ्योरेटिकल पे फोकस करते हैं। डू वी फोकस ऑन प्रैक्टिकल, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इसीलिए वो बच्चा रेडी नहीं होता। मैम ये पॉइंट सही नहीं था क्या, जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया की थिंकिंग पावर बेसिकली चेंज हो रही है, थॉट प्रोसेस चेंज का अभी हमें, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द चेंज इन थॉट प्रोसेस व्हिच यू मेंशन। हम ये नहीं कह सकते, अभी भी बहुत माइंडसेट यही है, गवर्नमेंट का ही है। अभी भी नॉर्थ में जाके देखो, बहुत एरियाज में जाके देखो, दे हैव द सेम माइंडसेट। मेनी पीपल डोंट वांट टू एंटर इन एंटरप्रेन्योरशिप। यू टॉक अबाउट फेमस cricketers, their mothers are even like, I don't remember which CEO, even Google CEO mentioned that her mother was not happy when he got the offer of from Google. He mentioned it out that her mother was, बेटा थोड़ा पढ़ लेता तो शायद सरकारी नौकरी हो। So still you cannot say the mindset of people have changed. It's not. And it is, even you can change this point, it's not about security. We are getting layoffs and all that, right? But if you are skilled, you get the plan कि अगर आप skilled हो ना, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये एक idea है, आप कहीं पे भी job कर सकते हो। You can start your own setup. सबसे पहले इस चीज में जरूरत क्या है, स्किल को enhance करना, ट्रेनिंग लगाना, ट्रेनिंग बच्चों की लगाना, बड़ों की लगाना, तभी तुम्हें वो चीज मिलेगी ना। Your BTech is a professional course. Talk about humanities. Is it a professional course? It's not. You have to do multiple, you can say first bachelor's and master's, then you have to do some PhD. Still you are not into a professional कि आप कुछ अपना कर सकते हो।
Talk about psychology. Psychology में MSc psychology and you do some subjects clinical psychology. You're a psychologist. You are into some professional domain. इस तरह के examples की बात करो. क्यों नहीं करते? वही तो बोल रही हूँ. Why don't you explore your ideas? यही तो चीजें you have to do it. It's not about giving tough topic, easy topic. It's about exploring and giving the best of the topics. एक एक point जो मुझे अच्छा लगा मैंने बताया. शिवम का कौन सा अच्छा था, विशाल का कौन सा अच्छा था. Farmer's point you could take it to good extent, विशाल. YouTube का पॉइंट ले सकते थे. Many people are being guided. ब्लॉगिंग से बहुत लोग अर्न कर रहे हैं. एम्प्लॉयड तो बन रहे हैं, वो खुद ही तो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. They're getting good business. ट्यूटर्स ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल चुका है लोगों को, राइट? उसको एक्सपैंड करो, अपने पॉइंट को ऐसे कंट्रोल मत करो एंड गिव गुड इलैबोरेशंस. विशाल अगर सॉरी शिवम, इफ यू हैव गुड पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट में अगर आप चले गए थे स्टार्टअप से लेकर, तो उसको प्रमोट करो. क्यों अकेले स्टार्टअप पे वो हो गए? प्राइवेटाइजेशन का बोला, कुछ भी नहीं बोला. बाहर क्यों? मुझे लगा कि मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे तो Comment what here what is the topic about? Topic is how you can generate self-employment. टॉपिक के अकॉर्डिंग बोलना है ना. ये थोड़ी हम गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो अब हम ये नहीं बोल सकते प्राइवेटाइजेशन. आप तो यही बोल रहे हो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है प्राइवेटाइजेशन एंड इट इज अ गुड थिंग. बुरी थोड़ी है. कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, कुछ लोग प्राइवेट में जाएंगे. एवरीवन वांट्स टू बी एम्प्लॉयड. आप इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप बोलो कि हाँ जितनी भी पॉपुलेशन है इट्स गोइंग इन करोड़ पॉपुलेशन, करोड़ तो जॉब ही नहीं है, कैसे करेंगे? खुद सोच के देखो ना. रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? हमारे पास कम है, लोग हमारे पास ज्यादा है, और ये तो चलता ही जा रहा है. इवन नाउ इफ यू कैन से इन पंजाब गवर्नमेंट इट स्टार्टेड विद द पेंशन स्कीम एंड ऑल दैट. फंडिंग है सरकार के लिए देने के लिए. मॉर्निंग में भी न्यूज आ रही थी, इफ यू हैव सीन द न्यूज इन द आफ्टरनून अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी इट्स गेटिंग ऑन लोन. इट्स नॉट एबल टू हैंडल. 113 करोड़ का इनके ऊपर लोन चल रहा है और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. कैसे बैलेंस करेंगे? उनको वो खर्चे भी निकालने हैं, सैलरीज भी निकालनी है, पॉसिबल ही नहीं है. ये चीजें डिस्कस करो. इससे आपका चेक होता है आप न्यूज कितनी सुनते हो. करंट से भी लिंक होता है ये टॉपिक. पॉलिटिकल एक्सपेक्ट से भी होता है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी होता है. क्लियर? अपने आइडियाज को ग्रूम करो, लिंक करो, ठीक है. डोंट डाइवर्सिफाई. मैंने ये भी बोला था पुराने टॉपिक सारे रिवाइज करो. और जब भी इंट्रोड्यूस करते हो क्रूशियल नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन. मेक योर इंट्रोडक्शन ना बिफोर. मीनिंग को एक्सप्लेन करके इंट्रोडक्शन बनाओ अपनी. और शिवम सीधा ही नहीं बोलना शुरू कर देता. पहले बहुत कामली, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वेरी कामली, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर very well said crucial. You have to appreciate the other person also. Very well said crucial. I agree with this opinion and it is a, you can say exact statement which we can look forward. थोड़ा सा पॉइंट को इलैबोरेट करके फिर उसको एक्सप्लेन करो. द वे यू स्पीक एक्चुअली मैटर्स इन जीडी. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. ये नहीं है ज्यादा बोलना है, कट करना है किसी को. अगर एक चांस पे मिलता है बेस्ट दो अपना. मैंने अभी लंबी रखी क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं दे रहे थे. अच्छा आप लोग मैम कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम था मेरे लास्ट में? conclusion, see, do you think conclusion was valid? Conclusion was going out of the box, Shivam. It should be like, yes, I'm satisfied. We all had an agreement that the statement is quite satisfactory. And we need to be skilled enough to generate employment for our own. To elaborate, to only then you can say you can have this line also. Only then India can become from developing to developed country. If everyone gets skilled enough to employ it on their own. Otherwise, many people will die of hunger. There will be excess of poverty and lots of other things. बेसिकली जनरिक रखना है और उस डेफिनेशन के अराउंड बोलना है और लास्ट में कुछ लोगों के पॉइंट है तो वो रखने हैं. हाँ, जब मैंने ये बोला कि अगर स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट पे कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा. हर कोई कहेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है. अगर मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ, आपको टॉपिक देती हूँ हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो. कोई लोग हार्डवर्क को ज्यादा बोलेंगे, कोई लोग स्मार्ट वर्क को बोलेंगे. हेल्थ इज वेल्थ इज अ स्टेटमेंट जिसपे सभी एग्री करेंगे. हेल्थ इंपॉर्टेंट है वेल्थ से. तो कोई स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें सभी एग्री करते हैं, कई स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें नहीं भी एग्री कर सकते. जिस स्टेटमेंट में 2 पॉइंटर्स हो उसमें आपने क्या करना है, जनरिक चलना. ठीक है. जिस स्टेटमेंट में पता है सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको पॉइंट करके कि हाँ हम लोगों ने कंक्लूड किया है दिस इज अ true statement, true fact, and we need to understand that the population is increasing, so we have to become skilled enough deal with the, you can say, the diversities, adversity which this future will bring for us. You guys can still attain a government job, but maybe think about the future aspects. Your kids, अपने बच्चों का सोचो जिसमें और पॉपुलेशन हो जाएगी और रिसोर्सेज और लिमिटेड होते जाएंगे.
व्हाट यू विल प्लान। आजकल के पेरेंट्स क्या प्लान करते हैं, स्टार्टिंग से ही बच्चों को बहुत कोर्सेज आने चाहिए, बहुत चीजें आने चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन आफ्टर सम टाइम, राइट। सो यू हैव टू थिंक, थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट होता है ना, ब्रेनस्टॉर्म करा करो, अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मैंने क्या करना है। और ये अकेला हाई सेक्टर में नहीं देखना कि प्राइवेट जॉब्स मींस कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली। आई टोल्ड यू वोकेशनल कोर्सेज मींस प्लम्बर, कारपेंटर, एनी पर्सन, कॉप्टर, इवन दैट पर्सन इज अर्निंग हिज मनी ऑन सम बिहाफ, राइट, उस पे भी जाओ। हर सेक्टर, मार्जिनलाइज सेक्टर को भी देखना है। इट इज एक्चुअली डिस्कस्ड, जब आप डिस्कस करते हो ना, जीडी करते हो, कि कॉमन मैन की बात कितनी कर रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कॉमन मैन की बात नहीं करते हैं। और डिस्कशन मैटर्स, कॉमन मैन पे बहुत पॉइंट्स आते हैं, बहुत। And it looks beautiful. Suppose none of you gave a good point. एक बच्चा कॉमन मैन को पॉइंट्स लेकर सभी मार्जिनलाइज सेक्टर्स को टारगेट करके कर रहा है। We need to talk about marginalized sector who do not एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाया आपने। ये सेक्टर्स ही तो होते हैं, जितना इन पे बात करोगे बहुत अच्छे पॉइंट निकलोगे और ऐसा लगेगा इन्होंने they have good information about these things, चाहे ना भी हो। क्लियर हुआ कुछ चीजें? प्लीज नाउ व्हेन यू एंड इट आउट, थोड़ा सोचो, लिखो इस पे, अपने अपने पॉइंटर्स लिखो। जैसे शिवम ने क्या पॉइंट बोला था, शिवम विशाल लिखे उस पॉइंट को, कुछ लिखे, अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज करा करो कि मैंने वो पॉइंट क्यों नहीं बोला, अगर विशाल बोल सकता था, शिवम बोल सकता था, मैं क्यों नहीं बोला। ओके क्लियर विशाल? इट वाज first one of you, so I'm not giving you so much of the, you can say, criticizing negatives and all that. They have attended, guys have attended lots of GDs right now. Okay, so it depends on topic. Sometimes they do wonderful, sometimes they are into this concept, because we are targeting each and every topic. Political भी होता है, economic भी होता है, current affair भी होता है, news भी होता है, every kind of topic is there. You need to prepare it wisely. 1-2 GDs, after 1-2 you will be able to understand how to actually do it. Okay, I hope you get a brief idea कैसा हुआ, but be regular in your GDs, attend the regular one, ताकि जितने topics पे हम demarcate कर सके should be. Okay, any problem to anyone regarding this topic right now? Okay, अभी लिखना है सबने, note your points, have a separate copy for this, और ये points बनाना।